Good afternoon, everyone. Can you all hear me? Please let yes if you can hear me and see me clearly. Good afternoon, sir. Can you hear me? Thank you for the yes, Anuj, you are audible. Thank you for confirming. Am I audible? So you can yes, sir. You are clearly audible. So give me a minute. We can set up. I'll share the screen, then we are good to go. Sure. Good afternoon, everyone. Welcome to the afternoon session with our expert, Mr. Nikunj Patwa. We will give you the index view and try to give you some stock option trade if possible. Probably, if the situation is right, we can give you an strategy trade. I apologize for it. Yes, sir. Recommendation given by PCB BTS. What to do? Hold on. Samir ji, we will take that query up. Just give us a minute. Let our experts settle down, and then we are good to go. So we can see your screen, but we can't see. Yes, you are visible now. We are good to go. You can start with the index view, and then we can go towards the stock options. Sure. So I think my screen is visible perfectly, right? Yes, sir. Perfect. So good afternoon, everyone. Good afternoon, Anuj. Welcome to another session, the afternoon session. Previously, it used to be Tuesday, जो VT expiry हुआ करती थी FIN Nifty की. It's a monthly contract. So everything has shifted to monthly last Tuesday of this month. So nevertheless, we'll start with the index view as we every time do. Nifty as we see आज थोड़ा सा ऊपर से cool off आया है and last 3 दिन में थोड़ा सा एक sideways move है अपने जो last Thursday को बड़ा मूव देखा था ऑन दी एक्सपायरी डे 5 दिसंबर के कैंडल के अंदर ही लास्ट 3 दिन के कैंडल्स बन रहे हैं तो it is trading within the range of that candle that is 24,860 and 24 almost 300 so एक sharp run up के बाद थोड़ा सा sideways move है and consolidation breakout had come near 24,444 and उधर से 400 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ा सा करेक्टिव मूव है and the 50-day exponential moving average is also near 24,410. So 24,400 एक crucial support zone है for Nifty. जब तक हम उसके ऊपर है तब तक there is a high probability that buying should come in the later part of the week and we can again retest 24,800 and 25,000 on the higher side. तो 24,400 जो 24,440 24,444 ये क्रूशियल सपोर्ट है जहां से ब्रेकआउट आया था 4-5 दिन पहले तो दैट एज पर द चेंज ऑफ पोलैरिटी कांसेप्ट द सब रेजिस्टेंस बिकम द सपोर्ट तो उसके ऊपर है तब तक band dips stands should continue and look for 24,800 on the higher side. अपने 50-day एक्सपोजर में आप तो अच्छे से होल्ड कर रहे हैं तो दैट इज अ पॉजिटिव साइन फॉर निफ्टी. Bank Nifty has been outperforming. The rally has been led mainly by the heavyweight in the Bank Nifty, that is HDFC Bank. इसने अपना और it is trading at life high levels and last 3 साल का एक underperformance के बाद finally it has given a range breakout on the daily and weekly scale. HDFC Bank की बात कर रहा हूँ तो which is why it has a higher weightage in the Bank Nifty. Which is why single handedly 52,500 के पास जो एक प्रीवियस 3 बार वहां से नेगेशन आया था वो क्रॉस करने के बाद एक शार्प अप मूव आया ऑलमोस्ट 54,000 या 53,900 के आसपास वहां से 300-400 पॉइंट का एक कूल ऑफ आया है बट still it is above 53,000 on the immediate per se and on the short term 52,800 and 52,600 उसके ऊपर तब तक band dips stand should continue in Bank Nifty as well and above 53,900 the index can scale to the fresh all-time high जो previously उसने बनाया
था 54,467 के आसपास. So 53,000 on the immediate basis support zone है बैंक निफ्टी में, and medium term से short to medium term से 52,600 से 500. तो जब तक ये levels के ऊपर है तब तक sideways consolidation or positive bias should continue in bank nifty. So even this index is trading above the 50-day exposure moving average and also the 200-day moving average, which is a positive sign. फिर निफ्टी पे भी एक बार हम quickly I'll share the levels, although the expiry is no more there on the weekly basis, but still Fin Nifty almost the composite of Fin Nifty and Bank Nifty are pretty similar. The only thing is that the Bajaj twins are included in the Nifty Financial Services Index, and the weightage is thoda sa would say bifurcated between ICICI Bank, HDFC Bank, and the Bajaj twins. So जब तक even Fin Nifty till it is above 24,400, I think medium term में buy and dip stand should continue and look for, and we can look for the fresh highs of 25,150 going forward till it is holding above 24,200, 300 and 400 on the lower side. So जब तक नीचे के supports are intact, the index may consolidate and then fresh leg of rally should follow in the coming days. तो जब तक supports के ऊपर है तब तक I think इन तीनों indices में band dip stance should continue. Bank Nifty being the leader and relatively outperforming Nifty as mainly due to HDFC Bank and ICICI Bank, which I almost have a combined weightage of over 40-50% in Bank Nifty. So that is the reason why index has been outperforming. And आज भी fall में Nifty जब 80 point नीचे है, Bank Nifty is trading flat. So that is why I think ICICI Bank आज lead कर रहा है. Kotak Bank slow and steadily is trying to come in and help the index on the higher side. So talking of Bank Nifty and banking stocks, एक stock जो I think what we can recommend and should be considered as a BTST for today, for the first stock as a BTST for this session is SBI. I think SBI can buy it current market price that is 865 and look for a target of keeping a stop of 850, 850, 852 and look for a target of 890, 895 on the higher side. So SBI is our BTST for the day as of now, the first BTST. PSU banks has been outperforming last 2-3 दिन में. The smaller PSU banks like IOB, Canara Bank, Central Bank of India, even Bank of Maharashtra, the smaller PSUs showed a very strong run up, and SBI being the leader, big heavyweight है, तो थोड़ा slow चलता है comparatively to the other smaller PSU banks, but PSU as a sector and the whole theme is looking good. तो ऊपर में 892 के targets के लिए keeping a stop of 851, I think we can get into SBI as a BTST. Current market price is 865. So I think we have shared the levels for 3 indexes. तीनों indices के levels हमने share कर दिए, support resistance जो कि trading per se and medium term per se we have shared, and we have shared one BTST, that is State Bank of India, and we have also shared the stop and the target for the same. So I think SBI is one stock that you should definitely carry as a trade, even for if you carry it for this whole week with a support of 850, you can get a target near 880 on the higher side. So I think in the meantime we can take few queries. अगर कोई और stock समझ में आता है तो we'll definitely share with you guys. So do we have any chance for any index trade or a strategy trade? Index आज पूरे दिन even we are morning से we have been trying to capture some trade with regards to the option buy side. So index has been consolidating, as you can I quickly show the 15-minute chart. ऊपर में it's almost trading between this 53,600 and 53,400. So एक 200 point 150 point के range में oscillate ही कर रहा है. So it's a bit on the buy side, it's very difficult as of now. अगर कुछ रहेगा तो definitely intervene.
अगर लगता है तो we'll definitely share Bank Nifty or Nifty, whichever we feel. But as of now, I think SBI is one stock which can do good. So I think uh, that should be definitely considered as a BTSC, and people should definitely get into it with a very lucrative risk reward in SBI. So Bank Nifty banking as a sector has been outperforming, and even State Bank of India, after a gap up, it has seen a tremendous sharp run up. और आज ऑलमोस्ट 3-4 दिन का कंसोलिडेशन के बाद वापस एक शार्प ऑप्टिक आया है. तो दिस फॉलो अप शुड कंटिन्यू गोइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स 880. So I think SBI is the stock that you should get into rather than waiting for any option trade. Option trade, because of this reshuffle of expiries, the momentum and are on the selective day only. So जैसे 5th December जो निफ्टी का एक्सपायरी था, उस दिन के बाद लास्ट 4 दिन से there has been no momentum. So that is what how the things have shifted to. So it's a new way of going into the trading session and trading per se with regards to option buying, index option buying. So I think everyone is accommodating with regards to the same. So I think this is how even we would go ahead. I think SBI, you should definitely get into it. Sure, sir. Let Yeah. me just roll up and so yesterday recommendation given here, bought PCBL for BTST at 478. What to do? Okay, 478. Yeah. So I think generally what BTST is given is for to capture the momentum in the last hour and the first opening. जो strong close होता है usually opens strong. So that is what the concept of BTST is. So I think a core trader should buy today and sell in the morning in the first 40-45 minutes. But still, nevertheless, even if he's holding, the stock is still in a bullish setup. And अगर चार नीचे में 465 के सपोर्ट से होल्ड भी कर सकते हैं, ऊपर में 510 515 के टारगेट के लिए. बट BTST एज अ कॉन्सेप्ट इज बेसिकली दिस दैट लास्ट आवर के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में वी ट्राई टू गेट इनटू इट एंड द मोमेंटम शुड कंटिन्यू इन द morning first 15-20 minutes. So that is what we try to capture with BTST. Sir, your view on Cochin Shipyard? I think Cochin bottom से almost 1280 से एक last 8-10 सेशन में almost 5% का उसका बाया सर्किट था. तो 5-6 दिन तो बाया सर्किट रहा, लेकिन अच्छे से नीचे से अच्छी रिकवरी देखी गई है. तो आई थिंक अभी इमीडिएट में 1580 एंड 1570 इज अ गुड सपोर्ट जोन. तो अगर आपको फ्रेश एंट्री लेना है तो आई थिंक 1580 1575 इज अ गुड एंट्री पॉइंट. अगर आपका ऑलरेडी पोजीशन है तो कीप अ स्टॉप और सपोर्ट ऑफ 1550 एंड होल्ड एंड लुक फॉर 1780 and 1800 on the side. Sir, New Gene bought at 1458. Nugent Software, right? Yeah. I think the stock is in a good uptrend. What is the buy price? I actually got it, missed it. 58. 1458. Okay. Yeah. So I think थोड़ा सा almost 2-3% lower than the buy price. But एक sharp run up आया last almost 2 weeks में 1050 stock scale to 1450. तो एक 400 पॉइंट के शार्प मूव के बाद एक करेक्टिव मूव आ सकता है. तो आई थिंक नीचे में एक और 40-50 पॉइंट का थोड़ा सा करेक्टिव मूव आ सकता है न्यूजिन में. तो आई थिंक आप होल्ड कर सकते हैं, बट इफ इट ब्रेक्स 1290 then you need to look into exiting the position. But as of now the setup is strong. तो immediate term में 1355 and 1360 के सपोर्ट लेवल्स है. तो उसके ऊपर है, तब तक ऊपर में वापस 1500 के लेवल्स के लिए यू शुड होल्ड. बट अगर पोजिशनल है तो 1290 के ब्रेक करने पे आप एग्जिट कर सकते हैं.
Sir, Oil India. So Oil India has been in a downtrend and अभी एक consolidation phase में है, but it's near the previous demand zone, which is 460, 465, 450 is a good demand zone for Oil India. Last 2-3 बार भी यहाँ से घूम के almost 30-40 पॉइंट का एक अपस्विंग देखा गया है. तो नीचे में 455 इज अ गुड सपोर्ट. अगर 455 ब्रेक करता है तो आई थिंक थोड़ा सा वरीसम है, बट अगर 455 नहीं ब्रेक करता है तो वापस एक बाउंस बैक टुवर्ड्स 490 कैन नॉट बी रूल्ड आउट. तो नीचे में 450 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए एंड लुक फॉर 480 490 ऑन द हाई साइड. Sir, Afcon's infra view for long term. थिंक थोड़ा सा रिसेंटली लिस्टेड है, तो अब नवंबर में ही लिस्टिंग हुए, तो टेक्निकली तो द प्राइस हिस्ट्री इज अ बिट, खाली 2 महीने का ही प्राइस ये है चार्ट पे, बट अगर जितना भी है आई थिंक लॉन्ग टर्म तो व्यू देना वुड बी डिफिकल्ट विद 2 मंथ्स ऑफ डेटा. बट रिसेंट स्विंग लो है जो 480, वो जब तक होल्ड कर रहा है तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली होल्ड, क्योंकि हायर हाई स्विंग में भी हायर हाई स्विंग बना रहा है. तो अगर जब तक कोई स्विंग का नेगेट नहीं होता तब तक बने रहिए 480 के स्टॉप से ऊपर में. अगर हायर हाइस कंटिन्यू रहेगा तो ऊपर में 560 580 के टारगेट्स के लिए. Sir, your view on Hudco? Yeah, Hudco, I was just checking. We really liked the stock. I think Hudco is also another BTST candidate. अगर किसी को लेना है तो I think keeping a support of 245, you can look at 270 on the higher side. So 265, 270 on the higher side. So एक range breakout निकला है. It was on our radar for a BTST candidate, and we also shared on the terminal. So I think you can look into Hudco as a BTST candidate also, keeping a stop of 243. You can look for 267 and 270 on the higher side. Sir, your view on protein? Okay. प्रोटीन कल ऑलमोस्ट शार्प एक 6-8 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था, लेकिन ऊपर में 2000 अगर निकल जाएगा तो द स्टॉक कैन रैली टुवर्ड्स 2200 एंड 2400 आल्सो. सो आई थिंक थोड़ा सा स्लो मूवर है, लेकिन अगर 2000 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो टेक्निकली भी एक अच्छा सेटअप बनता है, विच कैन गिव अ टारगेट टुवर्ड्स 2200 एंड 2400. एंड अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी रखना है प्रोटीन, नॉट बीइंग अ ट्रेडिंग पर से, बट अगर लॉन्ग टर्म 2-3 इयर्स का आपका टाइम हराइजन है, I think it's a definitely a must have in your portfolio. So ऊपर में almost 4-5,000 के टारगेट्स के लिए you can look for 2-3 years के टाइम हराइजन के हिसाब से. आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है, ट्रेडिंग के लिए I've shared the levels of 1800 के सपोर्ट से look for ऊपर में 2000, and 2000 के ऊपर क्लोज आता है तो 2200 भी आ सकता है. Sir, your view on Scient? I think Scient being an IT stock, थोड़ा सा IT इंडेक्स को अंडर परफॉर्म किया है, बट लास्ट 5-6 दिन में अच्छा कैचअप किया है. तो 1940 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट आया, तो द हायर हाई स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट ऑन द डेली स्केल. अभी इमीडिएट में 2160 के आसपास एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, तो उसके आसपास आ सकता है स्टॉक. तो आई थिंक यू कैन बुक योर प्रॉफिट्स टुवर्ड्स 2150 2160 के आसपास. Keeping a support of 2000, you can look for 2150 on the higher side. Sir, view on Chambal Fertilizers, 550 call, bought at 14. 550 कॉल थोड़ा सा OTM है, काफी OTM है, थोड़ा भी नहीं, काफी OTM है, 3% OTM है. बट चंबल
550 जिस दिन स्पॉट में निकल जाएगा आपका ऑप्शन कुड बी may give you at least 7-8 times return. So 550 on the spot level is very crucial for Chambal fertilizer. 550 जिस दिन निकल जाएगा आपका option would make you big money in that. तो keeping on the spot level अगर मैं बात करूं तो 520 का एक सपोर्ट है. अगर 520 नीचे में ब्रेक कर देगा तो वापस एक करेक्टिव मूव टुवर्ड्स 500 आ जाएगा. तो आई थिंक 520 जब तक होल्ड कर रहा है आपका ऑप्शन यू शुड होल्ड. बट ओटीए में थोड़ा टाइम डीके का आपका एक फैक्टर थोड़ा सा नेगेटिव वर्क करेगा आपके लिए. तो मोमेंटम अगर जिस दिन पिकअप होएगा तो उस दिन बाय करेंगे तो यू मेक यू विल हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी. बट एज ऑफ नाउ 550 इज द रेजिस्टेंस. 550 जिस दिन निकल गया तो यू विल मेक गुड मनी एंड 520 इज द सपोर्ट. अगर 520 के नीचे क्लोज हो जाता है तो आई थिंक यू शुड एग्जिट योर ऑप्शन बाय पोजीशन. टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स ऑलमोस्ट 1180 से 800 रुपया नीचे में 770 ही हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा एक टाइम के लिए फॉल अरेस्ट हुआ है. तो नीचे में 770 इज द सपोर्ट. और अगर ऊपर में 815 के ऊपर क्लोज आ जाता है तो एक थोड़ा सा पुल बैक रैली टुवर्ड्स 850 जो 50 डे एक्सपोजिशन मूविंग एवरेज है वहां तक एक बाउंस बैक ट्रेड आ सकता है. So keeping a support of 770, you can look for 840, 850 on the higher side. Sir, Olectra. Olectra is doing great. Even JBM Auto and Olectra. Olectra again 6-7 दिन का एक consolidation flag and pole and flag pattern है. एक sharp move के बाद 6 दिन का consolidation and a breakout above 1618, 1620 has confirmed. तो आई थिंक ऊपर में और 100 पॉइंट की जगह है इन ओलेक्ट्रा. तो लुक फॉर 1750 ऑन द हायर साइड, कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 1580. यू कैन लुक फॉर 1750 ऑन द हायर साइड. तो आई थिंक एक बीटीएसटी में शेयर करना चाहूंगा. आई थिंक CCL Products is one stock जिसका ओलेक्ट्रा जैसा ही पैटर्न है. इट्स अ पोल एंड अ फ्लैग. तो एक ब्रेकआउट एंटिसिपेट है 808 के ऊपर. तो 808 के ऊपर ऑलमोस्ट 6 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है. अभी 812 चल रहा है. कीपिंग अ स्टॉप ऑफ 788. लुक फॉर 845 एंड 850 ऑन द हायर साइड. तो एक राउंडिंग पैटर्न भी है एंड पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी है. तो CCL Product is our second BTST trade. We can buy at CMP, keeping a support of 788 and look for 845 and 50 on the higher side. So CCL Product is the second BTST for today. Lemon Tree. I think hospitality as a sector is doing really good. Indian hotel, EIH hotel, they're trading at lifetime highs. Even Lemon Tree, after a strong move of last 3 to 3 weeks, 120, 125 के ऊपर एक ब्रेकआउट आया था. कंफर्मेशन केम अबव 125. एक शार्प रनअप के बाद थोड़ा सा साइडवेज है, लेकिन ट्रेंड एज ऑफ नाउ इज पॉजिटिव एंड कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 135. You should definitely hold on to your position in Lemon Tree. And ऊपर में थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन 150 के टारगेट्स के लिए you should definitely hold. Sir, Vedanta. I think metal as a sector is doing good. In China के stimulus के बाद एक sharp move आया है. तो sharp move के बाद 2 दिन कंसोलिडेशन में है. कल एक इनसाइड बार था, लेकिन आज फॉलोअप आया है, बट नॉट कन्विंसिंग फॉलोअप है, लेकिन पॉजिटिव क्लोज है नॉनदलेस. तो 485 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. लुक फॉर 520 ऑन द हाई साइड इन वेदांता. आई थिंक द sector is in positive trend and Vedanta also setup is good. 485 480 के सपोर्ट से होल्ड कीजिए. लुक फॉर 520 to 525 on the higher side.
Geo Financials. I think Jio after strong run थोड़ा सा corrective last 4 दिन में एक lower top lower high lower lows का एक candle sequence है, लेकिन 320 330 is a good support zone. तो 330 से 328 का एक good re-entry point है. अगर किसी को fresh trade लेना है, I think 330 328 is a good re-entry point with a support of 320. You can look for 345 350 on the higher side. So एक अच्छा बाइंग जोन है 330 से 328 के बीच में, keeping a support of 320, look for 345 on the higher side. And so this will be the last question for the day. Sure. Like we'll take 2 more questions. No worries, no worries. Sir, MCX and BAC, short term and long term. Okay. Like 2 stocks for short term and long term both. Okay. So दोनों exchange related है definitely, and the whole exchange and the capital market as a theme is doing very good. So MCX again is trading at lifetime highs. थोड़ा सा corrective हुआ है, but it's a good re-entry point near 6600 and 6580. अगर ट्रेडिंग पर से है, अगर आपका व्यू 2-3 महीने का भी है, तो आई थिंक BSE and MCX both are good trades and you should be long in both these counters. अगर 2-3 months का time horizon, तो you can keep a support of 6400 and look for 7000 7200 on the higher side. And BSE again, the exchange has been outperforming everyone, and after एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट 4900 के पास आया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 10% का एक मूव आया. तो मीडियम टर्म में कीपिंग अ सपोर्ट ऑफ 5200, लुक फॉर 58 and 6000 ऑन द हायर साइड. थोड़ा सा करेक्ट मूव आ सकता है, बट डोंट बी टू वरीड अबाउट इट. एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद कंसोलिडेशन है. अगर नीचे थोड़ा सा कंफर्ट जोन एंट्री वाला चाहिए, तो आई थिंक 5200 इज अ गुड री एंट्री पॉइंट इन BSE. अगर आपका पोजीशन ऑलरेडी है, तो यू शुड डेफिनेटली होल्ड, कीपिंग अ स्टॉप ऑफ 5000 एंड लुक फॉर 6000 and 6200 on the higher side on both MCX and BSE. We are positive on both the counters. So that will be all for today. Thank you everyone for joining in. Guys, we are planning an IPO session since we have many IPOs coming this week. We'll update you in tomorrow's morning session. And most probably the session will be on 12th. Thank And you everyone. Thank you, Nikon sir. I'm sorry, just to intervene. I think CCL products 845 का high किया है. I think when we gave it was near 820. So at least 20-25 points का एक swing आया in CCL products. Almost 3-4% का एक move आया. So I think people who have bought, they should definitely consider, अगर intraday के पास है, तो you should definitely book your profits. अगर नहीं है, तो 810 के stop से hold कीजिए and look for 860 on the higher side. Got it, sir. Sure. Thank you everyone. Thank you, Nikon sir.